So today we have like 3 experienced practitioners with us today who will help us basically explore कि कौन से skills in demand हैं और हम कैसे एक handsome livelihood इनको सीख के बना सकते हैं. So I'll start with Sean and Sari. I'll like give a brief introduction कि 3D animations है क्या? For a person like me who doesn't know what 3D animations are, can you like briefly summarize कि 3D animations क्या होती हैं? Traditionally, the understanding of 3D animation is characters from like Toy Story, and you have sort of movies that you usually build a 3D model, and then you animate that and it comes to life. On the same movie, for example, यहाँ पे we've seen like Commander Safeguard, local examples of it. You have Toy Story, you have Big Hero 6. These are traditionally what our understanding is of 3D animation. But what I'm here to kind of explain is how that is changing over time and how that's going to be more applicable, how the definition of 3D is changing. What I do is we initially, my range of scope is basically either it starts from just putting characters together and making them move all the way up to there's this new term that we're coming to sort of talk about, which is motion graphics. So I do a bit of animation and motion graphics. Can you just ask Ghulam Mustafa कि आप थोड़ा सा बता दें briefly कि data analytics क्या है? Till then we can. Obviously, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जैसे इन पास्ट कहा जाता था ना कि ऑयल एक बहुत बड़ी कमोडिटी है, उसकी वैल्यू है. तो राइट नाउ इट हैज बीन यूनिवर्सली क्लेम्ड दैट कि जो डेटा है ये नेक्स्ट ऑयल है. अब होता ही है कि कन्वेंशनल बिजनेस अप्रोच हम देखें तो कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उसमें डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं होती. तो डेटा एनालिसिस का मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस डायनामिक्स में इधर इट कैन बी फाइनेंस, सेल्स, प्रोफेशनल, सप्लाई चेन, और इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इवन इन मेडिकल इंडस्ट्री आप होता यह है कि डेटा ड्रिवन आपने ये कि एक्शंस लेते हैं. जो भी आपके एक्शंस होंगे वो थ्रू डेटा ड्रिवन स्किल्स और डेटा ड्रिवन टूल्स होने चाहिए ताकि यह कि आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकें. आजकल इसकी ज़्यादा यूजेज और इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ गया और वी कांट हैंडल दीज डेटा. जैसे ये है कि अभी आपको पता है कि डिजिटली हर कंपनी डिजिटलाइज हो रही है, ई कॉमर्स के बिजनेसेस आ रहे हैं, रिटेल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऑनलाइन बिजनेसेस मूव ऑन हो रहे हैं. तो इन सब का डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना और फिर उसके बाद स्कैर्स रिसोर्सेज से डिसीजन मेकिंग करना, ये है इसका मेजर थीम कि भाई हमने क्यों करनी है डेटा एनालिटिक्स है ना, ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस में. Connection. So I'll move the conversation back towards 3D animations, and Sean and Sari can like further tell us about 3D animations के इस skill की क्या demand है digital world में और इसके benefits आप बता दें. And then kindly you can like proceed telling more about 3D animations. So yeah. Okay, so 3D animation traditionally जो है, it was restricted to what I talked about earlier, which is like movies and आपके जो feature films है. But what's happened in the last couple of years is that this field has changed very quickly, very rapidly, moving away from larger offices and production houses towards freelancers. And that is why the skills, 3D animations and motion designers in particular, which is a new term, uska demand jo hai, it's increasing quite exponentially, because what it is great not only for the clients, but it's also a win for the designer, because what was happening pehle was large production houses jisme bahut sare log the, anywhere from 10 to 100 people. They would obviously be more expensive, and then you would be working on one component of a larger piece. Ye jo ek larger piece hai, this takes more time, costs more money. So with startup culture and the need for not such large big budget animations, couple that with आपके जो YouTube, Facebook, Instagram, the need for smaller content grew very rapidly. So people started realizing that individually freelancers can make use of जो आपके जो तमाम softwares है, which are getting more and more accessible, more and more powerful. Computers are getting more and more accessible, more and more powerful. Your average gaming computer is much more affordable today than what it used to be maybe 5 years ago. So these things have allowed freelancers to pick up 3D skills and become sort of a one-man army.
And that is why this term has come about, which is a motion designer. And what these people do is they learn everything that the post production house or the animation house was doing, और वो लोग जो है एक smaller scale पे करते हैं. So they're typically a motion designer in teams of maybe 1 or 2 or 3. They'll put together a short 10-second piece, and uska with better software and better computing, it will be just as clean and it would be attractive to your clients and also the end user. You would get the results. So that's why the skills moving into, as we move into the future, motion designers, individual motion designers, freelance motion designers are becoming very popular just because of how easy it is to create content and how affordable it becomes for clients. And smaller teams can then spend time creating these nice animated pieces. Or software bhi काफी accessible हो गया है. Anyone can now, anyone with enough motivation and time can now pick up this skill. And I think if people are interested in 3D, and especially with so many startups needing content, it becomes attractive to the startups as well. And it becomes attractive to a lot of clients where they can just hire 1 or 2 motion designers and they can constantly get content versus having to approach a larger team, constant feedback loop hota hai. It becomes a very long drawn out process. I'm not saying that that's not a good thing. It's better for larger projects, but going into the future, you can see startups now are smaller teams of more competent people versus larger, big organizations, and they get more work done. So wohi cheez is coming into motion design as well, where you have 5 or 6 core people producing much more effective content. So that change is the biggest change that's happened. We've moved from big 3D animations, and I'll just share my screen. Can I do that now? Usma, just share my screen, go and segue into that. Okay, so I've just to talk more about that, I'll just give me a moment. Okay. Yeah, I've just shared the screen here. So traditionally, is my screen being shared? Yes, we can see it. Traditionally, 3D animation, when you would ask somebody about 3D animation, maybe 5 years ago, just even 5 years ago, they would think this is 3D animation. Aapka jo Frozen hai, all these characters, but these take a lot of time. And that's initially what I was talking about, that this type of content is very expensive, takes a lot of time, and it's also dependent on the whole team being competent. And now what we've seen is we've seen that change into sort of like this, where you've got individual people working on smaller projects. Complexity is obviously lower compared to something like this. There's less characters, but it's product focused. Okay, those smaller teams can come and say, hey, I want to make a small animated piece on headphones. And they can come and put this together. Ek hi aadmi hai bana sakta. And if it's more complicated, maybe 1 or 2 people. But with the rise of 3D animation software is becoming more accessible and computing power increasing, this is becoming a much more in-demand skill moving into the next couple of years. So I think anyone that is interested in 3D should definitely look into this. Even if they're not interested in 3D animation, it's a very valuable skill to have, because just talking about in case your use cases, it just doesn't even come into it. If a student picks up 3D modeling, rendering, he can go into not only visualizing ads, वो architecture में भी जा सकता है, वो industrial visualization में भी जा सकता है. There's so many uses for a sort of a design student picking up 3D because of how easy and how accessible it's become. So skills, talking about the general topic of the talk today, skills going into the future, I think anyone that's going into design and not so much if code and technical things don't interest you so much, do look into picking up 3D and just even if you not want to make a career out of it, explore it because of how easy and how accessible it's become. But yeah, that's my general thing. I think moving into the future, that would be ways that we could make the use of 3D animation, and not just for commercials and marketing, but also to help web OTT platforms. And it does not have to always move. It can be still renders also. Aapke tamam Eid greeting cards, now they look much better when they're little 3D stills compared to just a flat text. And I think illustrators who are already very competent with AI and Photoshop can do wonders with 3D if they get into it.
Definitely, you're absolutely right. It was very informative, and I got to learn a lot of new things. So, Ghulam, Mustafa, and Sean and Sai briefly introduced the skills that they have expertise in and the brief introduction of that. So, we would like you to also let the audience know कि digital marketing क्या होती है. Like briefly tell us, or it would be also nice if you can tell how has digitization changed the marketing trends and dynamics. ओके, सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली किसी भी डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने का नाम डिजिटल मार्केटिंग है। बहुत इजी चीज़ है। जो आपने बात की है कि डिजिटलाइजेशन ने डिजिटल मार्केटिंग के वर्क डायनामिक्स को कैसे चेंज किया, तो उसके बारे में हम इस तरह से कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द पावर टू रीच आवर ऑडियंस इन अ बेटर वे एट अ मच लोअर कॉस्ट। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखें, कन्वेंशनल मार्केटिंग जो हमारी होती थी, उसमें हम देखते थे कि आपको टीवी कमर्शियल्स में आपको एड्स नज़र आ रही हैं, हम उसको मार्केटिंग कहते थे। आपको बिल बोर्ड्स नज़र आते थे, आपको न्यूज़पेपर में एड्स नज़र आते थे, प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं, रेडियो एड्स नज़र आते थे। वो सारी थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसमें इश्यूज़ क्या थे? इश्यूज़ तो नहीं कह सकते, बट डिजिटल मार्केटिंग ने उनको ओवरकम कैसे किया है कि अगर आपने पहले एक टीवी कमर्शियल शूट करवाना है, आप टीवी पे अपना एक इश्तिहार देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। आपको एक पूरा प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच करना पड़ता था अपनी एड डिज़ाइन करवाने के लिए। आपको मॉडल्स हायर करने पड़ते थे, उसकी आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती थी। जबकि अगर आप देखें, अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप आ जाएँ, डिजिटल मार्केटिंग ने आपकी वो सारी कॉस्ट बहुत मिनिमाइज़ कर दी है। अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक पूरे प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत नहीं है, इतनी फॉर्मल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी इनफॉर्मल मार्केटिंग है। उसमें आप बहुत इजीली, इवन आप देखेंगे कि कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट कर रहे होते हैं फ़ोन से शूट करके। तो एक तो चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटलाइजेशन ने हमारी हेल्प किया मार्केटिंग में, वो ये है कि हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि टारगेट ऑडियंस को रीच करना, जो हमारी नीश है, जो हमारी ऑडियंस है जिसको हम चाहते हैं अपनी मार्केट करना प्रोडक्ट या बिजनेस को, उस तक पहुंचना काफ़ी आसान कर दिया डिजिटलाइजेशन ने। अगर हम पहले की, जिस तरह मैंने बात की, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, उसमें अगर आप एक बिलबोर्ड कहीं पे लगा रहे हैं, लाहौर शहर में अगर आप कहीं बिलबोर्ड लगा रहे हैं, तो आप कुछ हद तक टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, कुछ हद तक नैरो डाउन कर सकते हैं। आप किसी पोश एरिया में अगर बिलबोर्ड लगा रहे हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि वहाँ पे ऑडियंस उस तरह की होगी, तो किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली अपनी ऑडियंस तक नहीं पहुँच सकते। उसकी वजह से ये होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, वो डिवाइड होंगे जितनी भी ऑडियंस आपकी एडवर्टाइजमेंट देख रही है, नो मैटर वो आपकी टारगेटेड है या नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में इतने पावरफुल टूल्स आ चुके हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से कि आप जिस ऑडियंस को अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, जिस ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट, अपना बिजनेस, अपनी सर्विस मार्केट करना चाहते हैं, आप एग्जैक्ट उस तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसवा को, अपनी प्रोडक्ट है वो सिर्फ जो मेरी टारगेट मार्केट है वो उसवा और उस जैसी खवातीन है, तो मैं उन तक पहुंच सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। जबकि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो वो हमें इतनी पावर नहीं देती थी, हमारे पास इतनी पावर नहीं होती थी। तीसरी चीज़ जो डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे पास आई है, जो जिसका हमें फ़ायदा हुआ है, वो ये हुआ है कि हमारे पास बेटर एनालिटिक्स आ जाते हैं। अब अगर हम एक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, टीवी कमर्शियल है, रेडियो ऐड है, उसमें जो हमारे पास एनालिटिक्स आ रहे हैं, जो मैट्रिक्स आ रहे हैं, वो एक तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि वो इतने पावरफुल नहीं होते थे, वो इतना एग्जैक्ट मैट्रिक्स हमें आते थे। डिजिटल मार्केटिंग में जबकि आप देखें, आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल सकती है अपनी ऑडियंस की। आपको पता चल सकता है कि किस तरह की ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट को लाइक कर रही है, किस तरह की ऑडियंस आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो आप आगे से उनको टारगेट कर सकें। तो एक तो ये चीज़ आ गई कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं और अपनी जो फ्यूचर मार्केटिंग है उसको प्लान कर सकते हैं। दूसरी, इसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपके पास इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपने एडवर्टीजमेंट रन किया किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा उसका रिजल्ट क्या है। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो उसमें आपके पास डिलेड रिजल्ट्स होते थे, आपको बहुत टाइम लगता था। अगर आपने एक बिलबोर्ड पे आपने अपनी ऐड लगाई है, आपने टीवी कमर्शियल दिया, तो आपको जो रिजल्ट्स आने थे वो उसी वक्त नहीं आएंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे कि अब आपने कैसे इसको आगे लेके चलना।
तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जिनको डिजिटलाइजेशन ने काफ़ी हेल्प किया, हमारी जो मार्केटिंग की जो डायनामिक्स है उसको एंटायरली चेंज करके रख दिया, बहुत ईजी हो गया। पहले अगर एक इंडिविजुअल सोचता कि मैं अगर ये मार्केटिंग के प्रोफेशन में जाऊँ, मैं एक एजेंसी खोलूँ, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक अकेला बंदा ये काम कर सकता हूँ। उसको पूरी एक बहुत बड़ी टीम चाहिए थी, उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। लेकिन अब एक इंडिविजुअल आप भी सोच सकती हो कि मैं अगर एक अपनी एजेंसी खोलना चाहूँ तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि काम बहुत आसान कर दिया डिजिटलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। We talked about digital marketing, right? We talked about 3D animations. Briefly, आप लोगों ने इनकी demands बताई, introduce करवाया. इसी तरह ही data analytics की क्या demands हो सकती हैं? मतलब, as can a non-tech guy like transform his or her career in the field of data analytics? We would like to know from Ghulam Mustafa. अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डेटा एनालिटिक्स की किस फील्ड को हम चूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक नॉन टेक गाय इस फील्ड में आता है तो डेफिनेटली उसको अपना एक पाथ चूज़ करना है कि यार मैंने कौन से वाला एरिया पिक करना है। तो अगर उसमें हम देखें तो बीइंग अ नॉन टेक गाय यू कैन इजीली स्विच योर करियर फ्रॉम any field. Like I am a chemical engineer, but right now I am offering data analytics services, BI services to the business. अब उसमें ये ज़रूर आपने फोकस रखना है, क्योंकि इसमें जब आप ओवर पैशनेट हो जाते हैं कि यार मैंने एनालिस्ट बनना है, आई वांट टू बिकम द डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, तो उसमें आपको डायरेक्शन लेनी पड़ती है। अब उस डायरेक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए कि भाई डेटा एनालिटिक्स का रोड मैप क्या होता है, सबसे पहले आप डेटा गैदर करते हैं। अब जब आप डेटा गैदर करते हैं तो इस पे एक पूरी एक रिसर्च है, इस पे एक पूरे टेक्निकल टूल्स हैं कि भाई डेटा गैदर कैसे करना है। आई कैन गेट डेटा फ्रॉम क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब उसमें जब आपने डेटा इंफॉर्मेशन लेनी है आपने, तो आपने कनेक्टिविटी किस तरह रखनी है, तो वो दैट इज मोर सेंट्रिक टुवर्ड्स द यू कैन से द बैक एंड, जो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन वो एक बैक एंड का काम है। अब हमने डेटा गेट किया तो फिर आपने ये कि डेटा वेयर हाउसिंग करनी है, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लिनजिंग की, फिर आप डेटा एनालिटिक्स करना शुरू हो गए। तो ये वाला जो एरिया है ना कि भाई आपने डेटा गेट कर लिया, उसके बाद आपने ये है कि डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर ली और आपने डेटा प्रेडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करनी है, तो ये वाला एरिया ये है कि नॉन टेक गाय के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों? अब जरूरी नहीं कि नॉन टेक गाय को सिर्फ ये टूल्स ही सीखने, लेट्स से आई एम द पावर बीआई डेवलपर, जरूरी नहीं कि आपने पावर बीआई ही सीखना है सिर्फ। तो ये एक थोड़ी सी मिथ बनी हुई है कि भाई आई एम द नॉन टेक गाय, कांट स्विच माय करियर फ्रॉम लेट्स से केमिकल इंजीनियरिंग टू द टेक साइड। उसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि यार मुझे पावर बीआई नहीं सीखना, डेटा एनालिटिक्स के लिए मुझे ये मेरी स्टैटिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए। इवन आई शुड एटलीस्ट हैव वर्क 3 to 4 years इन द फंक्शनल साइड। कि लेट्स से कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कोई एआई मॉडल बना रहा हूँ, कोई प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हाउ ना होनी चाहिए। तो मैं तो इसमें ये इनरोज करूंगा कि इफ समवन who have experience in business side or commercial side and who has you can say the commercial acumen, he can easily switch into this field। क्योंकि उसमें अगर हम बात करते हैं टूल्स की, टूल्स पाइथन अगर आप यूज कर रहे हैं, पावर बीआई यूज कर रहे हैं, आप टेब्लो यूज कर रहे हैं, इन सब टूल्स का रोल लेट्स से 20-25% है। असल ये है कि आपने जब डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको बिजनेस नॉलेज होना चाहिए। तो आई बिलीव कि आप इजीली स्विच कर सकते हैं फ्रॉम नॉन टेक द टेक साइड, और उसमें क्योंकि आपका बिजनेस एक्यूमेंट अच्छा होगा, आपको नॉलेज बेहतर होता है, तो आप यूज़र की पर्सपेक्टिव से अपने डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं, यूजर्स के पर्सपेक्टिव से जो उन्होंने मॉडल्स दिए होते हैं तो आप उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली दे कैन डू। और उसमें एक एग्जांपल भी मैं कोट करता हूँ कि आई वाज वर्किंग विद द रिटेल इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो दे वर फेसिंग सप्लाई चेन इश्यूज। तो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्क इन सप्लाई चेन एंड इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो मुझे पता है कि यार वो अपनी इन्वेंट्री के उनके इश्यूज चल रहे हैं। Then I manage their issues with Python. If I don't know about the real business problems, then Python would not help me to get the real real decision making with that. Therefore, I would endorse that if you are the non-tech guy, you can move easily into this field. Yeah, that was surely very helpful, because definitely a non-tech guy now can enter into this field and take full use of these skills. Or, Asha, so I asked all of you like to briefly introduce ये skills होते क्या हैं, इनकी demands क्या हैं. Now I would like to know more कि as a youth, as like an undergrad student myself, youth के लिए
what do you say कि क्या tools होते हैं, application क्या होती हैं, what's the future of these skills, मतलब किस तरह one can earn at this age by learning these skills, इनका क्या फायदा हो सकता है? I'll start with 3D animations and then like the other two can jump in like and tell more about it अपनी field से related. So I'll start with 3D animations. Yeah. So the question is that how can somebody that like has just joined earn from it? Yeah. Okay, so I think initially learning curve is quite steep, but once that initial learning curve has been passed and you've learned all the different parts of 3D animation or motion design, as I call it, you can very quickly start earning, because in a country like Pakistan, there's so many startups, and all these startups are looking for designers and animators to put this content on Facebook. Fahad just spoke about the how quickly you can get content out there. Okay, though there are so many people in the country that need content. So someone that does pick up motion graphic design, Facebook, Fiverr, Upwork, these are great avenues. And Fiverr and Upwork, I think, are for a bit more experienced people, but for people that have just started, taking these skills and approaching companies that are looking for content would be a great way to start earning. Initially, of course, because of there's no real way to gauge कि एक अच्छा motion designer, like usually it's gauged how well and how quickly you can deliver your deadlines. So I think ultimately there's so many avenues. Facebook hai, Instagram hai. You can just approach startups and say, okay, I want to make something for you. I want to help you create a post, and I can do it in 3D. So I can put these skills to use, and that's a good way to practice and keep building a portfolio, which can then lead to even bigger projects. And wahan se the sky is the limit. You have Upwork, Fiverr, People Per Hour, these typical freelancing websites. So once a newcomer picks up just enough skills to help smaller companies and then keeps climbing the ladder, then वो newcomer का एक aesthetic बन जाता है. Then companies can start approaching the newcomer. I want this type of drawing, especially people that are illustrators. I think उनके लिए बहुत easier, because illustrators generally have a style that they work with. अगर कोई animator, he has a color palette that he works with. So when you develop your style and aesthetic, then companies can approach you for that content. Like I just echo again what Fahad said, because it's very true about using your phones to create marketing content. Sometimes you'll see that there are a couple of these teams, like there's Bekar Vines, for example. Clients will approach these content creators for that aesthetic. Same goes to motion designers. If the motion designer or the animator develops an aesthetic, then clients or companies will come to you. So that's a great way to earn when you are being approached. But when you're starting, approach startups, go on Fiverr, go on Upwork, and make a profile, and just keep creating content as much as you can. All right. So, ठीक है, 3D animations had like inspired a lot of us, but when we come to like digital marketing, Fahad Mustafa, right? So आप बताएं कि जिस तरह how has like this recent pandemic affected digital marketing की field? सब कुछ देखें online shift किया था, लोगों को इससे कैसे like फायदा दिया, and how did like people shift towards this e-commerce thing part? और इसका like बेसिकली जो पेंडेमिक रिसेंट आया कोविड, उसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया, बूम दिया हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को. ई कॉम इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई है और ई कॉमर्स जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से. जितना भी ई कॉम सेक्टर है उससे मार्केटिंग करनी है तो वो डिजिटल मार्केटर को ही अप्रोच करेगा. अब बेसिकली जो अगर हमारा जो ये रिसेंट पेंडेमिक है उसमें मैं अगर हमारी लोकल मार्केट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हेल्प उससे हमारी लोकल मार्केट को की है. वो इस तरह किया कि आज से पहले तक पाकिस्तानी जो लोग थे, आवाम थे, उनकी वो इतने ज़्यादा हैबिचुअल नहीं थे ऑनलाइन शॉपिंग के. वो ई कॉमर्स स्टोर से शॉपिंग करने के ज़्यादा हैबिचुअल नहीं थे. उनके कुछ अपने कंसर्न्स थे. उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब स्टार्ट में लोगों के साथ कुछ ऐसे स्कैम्स हुए जिसकी वजह से उनको लगा कि ये ई कॉम सारा स्कैम है, ऑनलाइन हम चीज़ मंगवाएंगे, हम ऑर्डर कुछ करेंगे, हमें मिलेगा कुछ और, जिसकी वजह से उनके कंसर्न्स कुछ पैदा हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें. लेकिन जब पेंडेमिक ने हिट किया लास्ट ईयर, उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास इस तरह ओकेजन्स भी आए, हमारे ईद आई, 3 ईदें गुजरी
अब लोगों ने शॉपिंग करनी थी, मार्केट्स बंद थी, मार्केट्स ओपन भी थी तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए थी, या फिर अगर ओपन भी थी तो लोग जाना नहीं चाहते थे टू ऑब्वियसली कोविड, तो उनको उनके पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने स्विच किया ऑनलाइन शॉपिंग पे। जब उन्होंने स्विच किया ऑनलाइन शॉपिंग पे उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उनको रियलाइज हुआ कि कितना ईजी है, हम ऑन मोबाइल से फोन यूज करते हुए हम चीज़ मंगवा लेते हैं और वो चीज़ ठीक भी आ रही है। अगर नहीं ठीक आती तो अब तो बहुत ईजी हो गया, रिटर्न पॉलिसीज बड़ी बेहतर हो चुकी हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं बहुत ईजीली। इसी तरह मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरे अपने घर में, मैं अगर मेरी फैमिली में कोई पहले मुझे कहता था, मैं उनको कहता था कि ऑनलाइन सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं, आपने जिधर से शॉपिंग करनी है आप ऑनलाइन कर लें, तो वो कहते थे नहीं नहीं चीज़ नहीं ठीक आएगी। तो अब जब ये पेंडेमिक के बाद वाली मैं अगर बात करूँ, मार्केट्स ओपन हो गई हैं, लाइफ काफ़ी नॉर्मल आ गई है, तो अब वो इतने उनको उसका ईज इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो खुद प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। क्योंकि आप जिस तरह अगर आप किसी लाहौर जैसे या कराची जैसे बड़े शहर में जा रहे हैं, तो आपने अगर शॉपिंग करने जाना है तो आपको सबसे पहले तो ये है कि आपको रश मिलेगा, आपको टाइम लगेगा जहां तक आपने जाना है, जिस मॉल में जाना है, जिस ब्रांड के पास जाना है, आपका फ्यूल लगेगा, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट होगा। वही चीज़ और आपने एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाना है, उसकी अलग हैसल है। आपको एक चीज़ एक स्टोर में नहीं मिली, आप किसी और क्लोथिंग स्टोर में जाएंगे। अब वही चीज़ आप फोन पे बैठे हुए अपने घर में अपने रूम में बैठे हुए कर सकते हैं। तो इस चीज़ ने हमारी जो मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा, जो काम हमारे अगले 5 से 6 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ग्रेजुअली ग्रो हो रही थी, लोग हमारी मार्केट के अंदर ट्रेंड आ रहा था ऑनलाइन शॉपिंग का, ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, वो विद इन अ ईयर होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। इसी तरह ये तो कस्टमर साइड होगी। इसी तरह अगर हम बात करेंगे जो सेलर्स हैं, जो कि शॉप ऑनर्स हैं, वो भी पहले रिलक्टेंट थे ऑनलाइन आने पे, उनको डर लगता था कि पता नहीं ये ऑनलाइन सारा स्टोर कैसे डेवलप होता है, कैसे काम होता था। अगर हम भी अप्रोच करते थे किसी को कि आपका बिजनेस है, इसको हम ऑनलाइन लें, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस लें, तो वो कहते थे मुझे ये चीज़ों का नहीं पता, हमारी दुकान अच्छी चल रही है तो ऑल इज गुड। लेकिन अब जब ये पेंडेमिक आया, काफ़ी देर तक मार्केट्स बंद रही, जब खुली हुई तो बहुत टाइम, तो थोड़े टाइम के लिए उनके जब प्रॉफिट्स स्क्वीज हुए तो उनको रियलाइज हुआ कि हम अब इस तरीके से नहीं चल सकते, हमें इसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ना है। तो वो फिर उन्होंने ई कॉमर्स स्टोर डेवलप किया, ऑनलाइन चीज़ें सेल करना शुरू की, तो उनको भी रियलाइज हुआ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसके थ्रू भी अपनी चीज़ें सेल कर सकते हो। तो इस चीज़ का लोकल मार्केट में तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। सिमिलरली अगर आप बाहर की मार्केट देखें, इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम यही केस हुआ है, लेकिन वो मार्केट्स जो हैं वहाँ पे लोगों का ऑलरेडी ट्रेंड था ऑनलाइन शॉपिंग का, वो उससे बढ़ गया। पाकिस्तान जैसे कंट्री में, ये एशिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगर मैं अपनी, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड देता हूँ, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस तरफ आना शुरू कर दिया। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये पेंडेमिक हमारे लिए एक वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ कि इस लिहाज से हमारे लिए अच्छा रहा है डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से। Definitely. So, coming towards data analytics after digital marketing, because काफी interesting चीजें फहद उस्मान ने हमारे साथ share की हैं, relating it to COVID and how COVID affected it, और अब उसकी क्या space और importance है market में. So, I would like to know data analytics के लिहाज से कि इसके क्या building blocks हैं and how has this affected data-driven decision making. Like क्या important areas हैं data analytics के focus करने के लिए, and for students opportunities क्या इसकी हो सकती हैं, how can they like take use of this particular skill and make full use of it, और उनको क्या फायदा हो सकता है, I mean future क्या है? और उसमें डेफिनेटली जैसे भी फाहद बता रहे थे कि इस पेंडेमिक के बाद दुनिया बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है। नाउ एवरी कन्वेंशनल बिजनेस इज ट्रांसफॉर्मिंग हिज बिजनेस एक्टिविटीज इनटू द डिजिटलाइजेशन। अब जैसे जैसे आप डिजिटलाइज होगे, आप अपना ई कॉमर्स स्टोर ओपन करोगे, अगर ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू करते हैं, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे आप ऑनलाइन करते हैं ना, तो आपके पास डेटा रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाती है। अब उसमें होता ही है कि इससे पहले हम देखते थे कि भाई एक कंपनी का एक मालिक है, वो एक छोटी कंपनी चला रहा है, अपनी प्रेजेंस में चला रहा है। अब ये है कि दुनिया ट्रांसफॉर्म हो गई है, अब एजाइल मेथोडोलॉजी भी आ गई है। अब होता यह है कि लेट्स से आई एम इन पाकिस्तान, बट आई एम ऑलरेडी ऑफरिंग सर्विसेज टू कनाडा, टू यूएसए, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इस फील्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एंड अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट करें विद डिजिटल मार्केटिंग, तो डेफिनेटली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को भी देखते हैं
तो डेटा, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर आपने ओपन कर लिया, आपने ऑनलाइन रिटेल सेलिंग करना शुरू कर दिया है, इवन अगर आप ऑफलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये है कि डेटा बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, तो आपको उसमें से डिसीजन मेकिंग करनी है। अब हम आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम देखते हैं तो डेटा एनालिटिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे मैं इससे पहले आपको बता रहा था कि सबसे पहले तो ये है कि आपको यूजर सेंट्रिक होना पड़ता है। क्यों? कि अगर आप डेटा एनालिसिस आप कर रहे हैं और आप बिजनेस के केपीआईज को ही समझ नहीं पा रहे, तो यू कांट मेक इफेक्टिव डिसीजंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न अबाउट दैट इंडस्ट्री फॉर विच यू आर ऑफरिंग योर सर्विसेज। लेट्स से मैं अगर केस स्टडी ले लेता हूँ रिटेल इंडस्ट्री की, तो अगर मैं रिटेल इंडस्ट्री के लिए कोई एनालिसिस करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो ऑल द jargons, all the terms about retail industry। फिर उनका ऑपरेशंस क्या होगा, उनका वर्क फ्लो क्या होगा, ये मुझे पता होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि यार मुस्तफा हम तो डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, बट यू आर टेलिंग कि भाई बिजनेस को सीखो। डेफिनेटली जब तक आप बिजनेस को नहीं समझेंगे, ना तो आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ना आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। इवन जो जो हमारे तीसरे भाई थे शान अंसारी, कि आप 3D एनिमेशंस भी बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट सेंट्रिक है कि क्लाइंट सेंट्रिक है, उसकी टैगलाइन क्या है, कस्टमाइजेशन क्या है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने अपने केपीआईज डिफाइन करने हैं। जब आपने अपने केपीआईज डिफाइन कर लेने हैं विद बिजनेस और उनके जो यूजर्स की फीडबैक लेने के बाद, फिर आपने एनालिसिस की तरफ आना। तो नेक्स्ट फेज होता है कि उस डेटा को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं। अगर हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो बिग डेटा, तो आपको यह है कि ईटीएल एक्टिविटीज, डेटा वेयर हाउसिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है कि भाई डेटा गैदर किया, उसकी डेटा वेयर हाउसिंग करनी है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ईटीएल एक्टिविटीज करनी है। उसके लिए पावर क्यूरी बहुत बड़ा टूल है। उसके लिए मतलब अगर आप डेटा वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, तो आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको एसक्यूएल लैंग्वेज सीखनी है आपने। तो ये एक इसका पहला फेज आ गया। फिर सेकंड फेज आता है कि भाई आपने डेटा ले लिया, आपने पास्ट डेटा ले लिया, नाउ यू विल डू सम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जिसमें हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं। अब डैशबोर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे टूल्स कौन से सीखने हैं आपको पावर बीआई इस वक्त वेल रिनाउंड टूल है इस काम के लिए। आप टैब्लो सीख सकते हैं। टैब्लो और पावर बीआई इस वक्त दोनों इस फील्ड के लिए दी बेस्ट टूल समझे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपके पास कोई भी बैकएंड पे सर्वर हो, आप उससे कनेक्ट कर लेते हैं। आपके पास डेटा जितना मर्जी ह्यूज हो, आप उसको ट्रांसफॉर्म करके आप उसके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करके डैशबोर्ड्स कर लेते हैं। इवन आप उसको पब्लिश करके अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। इस वक्त जो डेवलपर्स हैं, जो पावर बीआई डेवलपर हो या इवन टैब्लो एक्सपर्ट्स हों, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। और इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद तो डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है, स्टिल जॉब्स हैं, लोग नहीं है, एक्सपर्ट्स लोग नहीं है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस में साथ साथ आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद फिर आप कहते हैं कि मुस्तफा हमने पास्ट बिहेवियर देख लिया, रिटेल इंडस्ट्री का मैंने एनालिसिस कर लिया, डैशबोर्ड्स देख लिए, नाउ आई वांट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सेल्स। तो भाई अगले 2 साल में मेरी कितनी सेल्स होगी, अगले 2 साल में मेरा कितना फुटफॉल होगा। अब मुझे लेट्स से कि प्रमोशंस देनी है, तो क्या मुझे मंथ स्टार्ट में प्रमोशन देनी है, कि मिड ऑफ मंथ देनी है, कि एंड ऑफ मंथ देनी है। अब मुझे प्रमोशन, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो, तो आपने प्रमोशंस देनी है, तो ये ऐड अपने किस एरिया को दिखाना है आपने। अब आपने अपनी इंडस्ट्री सेगमेंट कर ली है। अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई मैं क्वालिटी सेंट्रिक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आप किस एरिया को टारगेट करोगे, जिन लोगों की बाइंग पावर क्या है। अगर आप बात करते हैं कि यार मैंने तो ज्यादा क्वालिटी नहीं बट मैंने नंबर्स ज्यादा बेचने हैं, तो फिर आप मैस ऑडियंस को कैसे टारगेट करोगे। तो इसके अगेंस्ट फिर आप ये है कि कुछ मॉडल्स बनाते हैं कि यार रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, जिसमें एआई का रोल आ जाता है, मशीन लर्निंग का रोल आ जाता है। अब एग्जांपल ले लें कि अगर मैं किसी स्टोर पे जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ भाई मेरे बच्चों के पैम्पर्स दे दो मुझे। अब मैं पैम्पर्स बाय कर रहा हूँ, तो उस स्टोर के पास रिकमेंडेशन सिस्टम होना चाहिए विद द पास्ट डेटा और सम एआई और एमएल मॉडल के भाई अगर मुस्तफा बाय कर रहा है पैम्पर्स, तो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए रैशिस क्रीम भी खरीदेगा, ये बच्चों के शैम्पूज भी खरीदेगा, ये उनके उनके वाइप्स भी खरीदेगा। और अगर ये पेरेंट है तो उसको बच्चों का दूध भी चाहिए होगा। तो सेम है इन द ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जा रहे हो तो तब भी रिकमेंडेशन आनी चाहिए, आप ऑफलाइन ले रहे हो तो तब भी रिकमेंडेशन आनी चाहिए। तो ये सारा सिस्टम, ये डेटा एनालिसिस का एक नेक्स्ट फेज है कि भाई आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लाइकवाइज अब आप कहते हैं कि मुस्तफा मुझे अब क्योंकि मैंने अपने ये है कि मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास ये है कि 500 स्टोर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द पाकिस्तान। अब उनकी सप्लाई चेन मैनेज करनी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेम यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट मंथ मैं स्टोर ए में भेज दूँ, स्टोर बी में भेज दूँ, स्टोर सी में भेज दूँ। तो आई वुड हैव सम, क्योंकि मेरे पास स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, पैसे भी कम है, उसके लिए फिर आप एक मशीन लर्निंग के मॉडल लगाते हो। कभी उनका पास्ट डेटा देखा आपने, सीजनलिटी इफेक्ट देखी, मार्केट बास्केट एनालिसिस किया, उनके ये क्वालिटेटिव एनालिसिस किए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए, तो फिर आप ये है कि नेक्स्ट फेज में एआई और एमएल करते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को रैप अप करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड इज वेरी हाई। मार्केट डिमांड इतनी है कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, लोगों के पास इसके मतलब ये है कि
इतना ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है। तो अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैं रिवाइज करूँ, सबसे पहले आप डेटा गैदर करेंगे तो आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आप एसक्यूएल सीख सकते हैं, इसमें आप ये है कि सैप हना की लैंग्वेज सीख सकते हैं। फिर आप बात करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग को आप सीख सकते हैं। फिर आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं तो आप पावर बीआई टैब्लो सीख सकते हैं। फिर अगर आप मशीन लर्निंग और एआई सीखना है आपने, तो फिर उसमें पाइथन है, आर लैंग्वेज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट तो फिर स्काई इज द लिमिट। आई होप आई कवर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। Yeah, definitely. Thank you so much. That was very, very insightful. बहुत informative था. So, just like a concluding remark from all of you. आप लोग किस तरह youth को convince कर सकते हैं, or you can like grab their attention, because ये बहुत interesting digital skills हैं. What's like your concluding comment अपनी field से related के how can they take full use of these particular skills or excel कर सकते हैं, just like you all are sitting on these posts इतने skills सीख के. तो आप लोग क्या एक advice या एक कोई भी comment या कुछ भी concluding कुछ देना चाहेंगे? That would be very grateful. So I'll start with any one of you can start. Okay, so Sean, you can just start. So just to clarify, the question is how can someone take these skills and go further with it? Yeah. In particular, I guess my answer would apply to the other people here as well. I think independent research and just constantly pushing finding the motivation to keep learning is very important. Okay, because nothing, as everyone has said today, because we are going towards individuals working, and it's very skill based. It's not generals. Like there is a need for a few good people versus a lot of people doing the same task. The companies need that, and that is what the need is. So I think to keep excelling, at least in 3D animation, would be to constantly so find your niche, get comfortable with the software. Initially, it's not going to be something like I've learned something instantly over. It's going to take time and practice. It's like coding. You learn any language. We've talked about Python today. It takes time. So once you learn it, it's practice it, and then keep yourself busy. What I tell some of my students here at the university is, every week push yourself to create something in the tool. Don't only work jab ke koi kaam. Come up with 3 words and create something. Usme you keep your skills fresh, and to run into problems is where you will learn. So I think if people keep running into problems, clients is a good way to get problems given to them, because the deadline of the challenge hota hai jaake ye cheez banao, we have to post it. So challenge is a good way to keep learning and staying ahead of the curve, and then constantly making something, even if it's not giving you money, making something on Instagram pe dalna, Facebook pe dalna, YouTube pe dalna, constantly putting content out there to increase your brand awareness, your brand as a sole motion, as a freelance motion designer. So I would say to keep pushing, keep learning. बहुत सारे resources there for all the tools we use. We use a few tools, like there's Cinema 4D, there's Blender. In सारे tools के forums है, there's Instagram pages, there's Twitter. Interact with the communities that makes these tools, and then keep pushing yourself. But just my advice to newcomers would be find a drive to keep yourself busy and keep learning. Don't say कि मुझे अब आगे एक चीज बनाना, मैं यही चीज बनाऊँ for like the next 1 year. You'll become stale very quickly, because another fresh graduate with more drive and passion will outrun you, and then he will be ahead in you. So constantly trying to stay fresh, but don't overwork, don't burn out. Find a balance, and then keep trying to improve what type of content and what motion design is coming out of Pakistan. Okay, perfectly. So you're trying to say more like thinking out of the box and broadening your horizon, and making yourself get into, yeah. That is something to add also, that I encourage my students to do, is appreciate other people's work. Aksar what happens is that, especially motion designers, because they're working individually, वो थोड़े siloed हो जाते हैं. They say, okay, I'm just going to make this, or they'll see one reference, or उसी reference को छापेंगे for all that. I encourage people to go on Pinterest, go on YouTube, see what other people are doing, appreciate their work, and challenge yourself to copy that, just to learn how that person created something that was very aesthetically pleasing. So don't be siloed, constantly learn, and don't be afraid to say, okay, my design was not good, usne behtar kiya, let me learn from that. That's one way to keep improving, to just keep interacting with what other designers do.
I think we learn best when we are interacting together versus working in a silo. Definitely, no doubt. So, Fahad Usman, digital marketing से related, if anyone is interested in learning, आपकी क्या advice होगी? अच्छा, मैं इसमें शॉन की बात को कंटिन्यू करूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ये सारी ही स्किल्स के लिए एक्सप्लेन कर दिया शॉन ने। लेकिन वही बात है कि हमारे पास मार्केट में इस वक्त रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो स्किलफुल रिसोर्सेज है ना वो बहुत कम है। तो जस्ट बिकॉज यू आर अ फेसबुक यूज़र, तो आप ये मत समझो कि मैं फेसबुक मार्केटिंग शुरू कर सकता हूँ। पहले चीज़ आप लर्न करो, अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करो, फिर मार्केट में जाओ। हमारे पाकिस्तान में अगर मैं स्पेशली बात करूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी दफ़ा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, कि वो सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी समझ लेते हैं, उनको लगता है कि हम कर लेंगे बस। तो अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करें, उसके बाद मार्केट में जाएं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये बता दूं कि ये एक तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये फॉर लिमिटेड टाइम के लिए, ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। और आप अगर अपने आप को अप टू डेट रखेंगे तो ये आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कुछ सालों बाद ये वाली जो स्किल है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। अगर आप अपने आप को अप टू डेट रखते रहेंगे तो ये तो लॉन्ग टर्म चल रही। तो ये बहुत अच्छी करियर ऑप्शन है, आप इसको चूज करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने आप को कीप ऑन लर्निंग। शॉन ने जैसे ये बात की है कि आप ये नहीं कर सकते कि मैंने अगर एक दफ़ा सीख ली एक चीज़, मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहा हूँ तो मैंने वो सीख ली, तो उसके बाद मेरी फॉर लाइफ यही चीज़ चलनी है। आप लोग खुद भी देखते होंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिससे हमारी इंटरेक्शन होती रहती है। हम सर्च इंजन यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हम उन चीज़ों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो अगर मैं आप एग्जांपल दूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप स्नैपचैट, ये कितनी फ्रीक्वेंटली अपना इंटरफेस चेंज करते हैं। ये चीज़ें बहुत क्विकली चेंज हो रही होती हैं। तो अगर आप किसी टाइम को ये सोच लेंगे कि मैं इसका एक्सपर्ट बन गया हूँ, तो बस फिर आप गए। थोड़ी देर तक सेम लाइक शॉन सेड कि आपको कोई ना कोई आपको रिप्लेस कर देगा। तो अपने आप को एक तो आपने साथ साथ अपने लर्निंग फेज में रहना है, चीज़ों को सीखते रहना है। दूसरा ये है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर स्कोप की बात करें, अगर फ्यूचर की बात करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते हैं, लोग मुझसे आते हैं, वो कहते हैं स्किल हम वो सीखना चाहते हैं जिसका फ्यूचर भी कोई हो। ऐसी स्किल ना हो कि हम फॉर द टाइम भी सीख ले, हमें अभी फायदा दे रहा है, कल को जाके वो हमें हमारे लिए भी वेस्ट हो जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग एज अ होल अगर हम बात करें तो ये तो आप सेंचुरी से चलती आ रही है मार्केटिंग, और आगे भी चलती रहेगी। वो इवॉल्व होती रही है। पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, अब वो डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। अब जैसे जैसे एआई इंप्रूव हो रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट उसमें आ रही है, तो ये इवॉल्व होती जाएगी। तो ये स्किल बहुत अच्छी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अपना करियर चूज करना चाहते हैं। उसमें आपके पास एक और फायदा सबसे बड़ा ये है, मैं मोटिवेट करने के लिए कहूँगा कि हमारी लोकल मार्केट में इससे रिलेटेड बेतहाशा जॉब्स है। आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप अगर आप सीखना भी चाहते हैं, अब वैसे तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको फ्री में भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, आपको पेड भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस तरह भी नहीं, आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो आपको किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में चले जाएं, अपनी सीवी लेके, और आप उनको कह दें मुझे एज इंटर्न ही हायर कर लें, तो वो आपको इजीली रख लेंगे और आप वहाँ जाके अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकें। उसके बाद जैसे कुछ देर पहले भी बात हुई थी कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट, फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, पीपल पर आ रहा है, बेतहाशा और इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उधर आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और क्या कहती हैं, बहुत अच्छा, मैं खुद एज अ फ्रीलांसर भी मैं काम करता हूँ, तो बहुत अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बाहर की कंट्रीज में आप अपनी सेल करें और अपने आपको क्या कहती हैं एक स्किल बेस्ड आप काम करें, खाली एजुकेशन पे डिपेंडेंट ना रहें। अपने साथ साथ जो लोग अभी स्पेशली वो लोग जो कि अभी अपनी स्टडीज़ के फेज़ में हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं फिर आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट कर दूं कुछ अर्न करना। तो जब आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी आपका यूनिवर्सिटी चल रही है, कॉलेज चल रहा है, तो आप उसके साथ साथ ये चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कोई भी स्किल, कोई भी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, बाकी दोनों मेरे पैनलिस्ट, फेलो पैनलिस्ट, वो भी ये बात करेंगे, कोई भी स्किल सीखना मुश्किल नहीं है अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है और अगर आपके पास मोटिवेशन है। कुछ सीखना मुश्किल नहीं है। आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था, मैंने तब ही स्टार्ट किया था, अपना एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया था, और वहाँ से मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को एनहेंस किया, और करते 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 मैं इस वक्त यहाँ पे आया हूँ। मुझे 2 साल में अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट किए हुए, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्किल्स हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लूँ, सारा फोकस स्टडीज़ पे रखूँ और उसके बाद मैं ये प्लान करूँ, तो वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी।
तो ये है कि आप अभी से सीखना शुरू करें। यूट्यूब बेस्ट अकेडमी है, यूट्यूब पे चल जाएं, आपको बेतहाशा कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी आपके पास वेबसाइट है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूडेसिटी है, ग्रास रूट्स है आपके पास, आप ग्रास रूट से कर सकते हैं। डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे हमारा वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आपके पास स्किल है। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। ये तो अभी आजकल के दौर में आजकल के स्टूडेंट्स को जो जितनी फैसिलिटीज मिल चुकी है ना, जितना इजी एक्सेस है इनके पास ये सारे कंटेंट की, आई विश हमारे पास होती, मतलब कि थी तो हमारे पास भी, लेकिन इस हद तक नहीं थी। अब तो बहुत बहुत इजी एक्सेस है। आप अपना इंटरनेट ऑन करें और आपके पास हर चीज अवेलेबल है। तो आपको ये चाहिए आपको कि आप इससे फायदा उठाएं और इसको सीखें। बेशक आप इसको एज अ करियर ना भी लेके चलें, जरूरी नहीं होता कि आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आपको उसको एज अ करियर ही लेके चलना है। आपको वैसे भी ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको थ्री डी एनिमेशन के बारे में पता होना चाहिए। सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप नहीं भी एज अ करियर इसको लेना चाहते तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये चीजें जरूर सीखनी चाहिए। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बातें की हैं रिगार्डिंग हाउ मोटिवेशन, पैशन या इंटरेस्ट होना जरूरी होता है इन स्किल्स को सीखने के लिए, और किस तरह जरूरी नहीं कि आप सिर्फ डिग्री लें पहले उसके बाद ये स्किल सीखें। anyone anywhere at any time can learn these skills for sure. तो अब गुलाम मुस्तफ़ा, what is your take on this? आप कोई concluding remarks देना चाहेंगे? इसमें डेफिनेटली सबसे पहले तो ये दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। अब इसमें अगर बात करें ना कि भाई डिग्री होना चाहिए, तो मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियर, और मैं बात कर रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स की, मशीन लर्निंग की। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री में रिलेटेड नहीं है, मतलब ये है कि आपकी डिग्री ऐसी नहीं है तो आप ये है कि वो स्किल नहीं सीख सकते। एवरीवन कैन लर्न एवरी स्किल। बहुत आसान होता है इनिशियली, लेकिन अब उसमें यह है कि आपको स्किल कोई भी सीखना है तो मेरी उसमें एक तो ओपिनियन ये है कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि भाई आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इफ़ यू आर इन द फाइनेंस गाय और यू आर द HR गाय, इवन आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आप ये चीज़ें सीख नहीं सकते। यू कैन लर्न इट एंड इवन यू कैन अप्लाई दीज स्किल्स इन योर फील्ड विद मोर प्रोडक्टिविटी। अब मैंने देखा है कि कुछ, अब जैसे ये बता रहे थे अभी, फहद बता रहे थे, अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं यूईटी में जाके जो हमारे टीचर्स हैं उनसे हमारी बात होती है कि जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस वक्त पाइथन सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके वो मॉडल अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में रख रहे हैं। तो अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसको अभी से अपनी लाइफ में ऐड करें, नर्चर करें उसको अपनी लाइफ में, उसमें डेली बेसिस पे लर्न करना शुरू करें। फिर उसके बाद जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा खुद को। आपको ये है कि आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा कि आपने कौन सा टूल, कौन सा एरिया पिक करना है। अब इवन बिजनेस एनालिटिक्स की अगर आप बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो इसमें बंच ऑफ फील्ड्स हैं। अब आपको चूज करना है कि यार मैंने किस फील्ड को सीखना है। लेट्स से अगर आप चूज कर लेते हैं कि यार मैंने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, मैंने डैशबोर्ड्स पे काम करना है, मैंने पावर BI डेवलपर बनना है, देन स्टिक टू दैट फील्ड। पर फिर उसमें यह है कि डेली बेसिस पे आपने स्टडी करनी है। मैं आज भी मैं ये है कि मैंने पेड कोर्सेज लिए होते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडमी है, एडीएक्स है, स्ट्रक्चर लर्निंग आपकी हो जाती है। फिर मैं जब इवन ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ तो हर एक स्पेशलिटी एरिया के, मैं पावर BI डेवलपर हूँ तो मुझे नैरो डाउन करना है खुद को और मुझे इसी फील्ड में सारी चीज़ें सीखनी है और एक्सपर्ट बनना है इस फील्ड का। फिर आपकी वो प्रीमियम वैल्यू मिलेगी जो मार्केट में किसी के पास नहीं होगी। लेट्स से अगर आप पावर BI डेवलपर हैं तो आपको इसी फील्ड में रहना है, आपको डैक्स एडवांस लेवल तक सीखना है, आपको पावर क्यूरी एडवांस लेवल तक सीखना है, आपको डैशबोर्ड्स एडवांस लेवल तक आने चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन डिटेल। और इसमें डेली बेसिस पे आप स्टडी करना शुरू करें। डेली बेसिस पे रोज एक अपनी हैबिट बना लें और अपनी जॉब को इसी तरह ट्रांसफॉर्म करें कि भाई इसी फील्ड में जॉब करनी है आपने। इफ यू आर स्टडी, अगर आप स्टडी, इफ यू डूइंग स्टडी, तो आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स इस पे करें। मैंने रिसेंटली MBA किया और अपने MBA में हर जो एक यूनिवर्सिटी का एक जो सब्जेक्ट होता है उसमें कोई आपको प्रेजेंटेशन मिलती थी, कोई प्रोजेक्ट मिलती थी, आई ऑलवेज इनकलटेट और ऐड कर लेता था मैं इसको अपनी उस फील्ड में, प्रेजेंटेशन में, और उसमें यह कि डेली बेसिस पर आपकी लर्निंग होती थी। तो डेफिनेटली अब इसकी डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड है, लर्निंग बहुत आसान है, आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं यूडमी पे, एडेक्स पे, कोर्सेरा पे। तो स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन अपने आप को नैरो डाउन करें, स्पेसिफिक टूल्स पे फोकस करें और एक्सपर्ट बन जाए कि भाई आप इजीली ये है कि पूरी मार्केट में कैप्चर कर सके, कि हर एक को पता हो कि भाई इफ़ यू नो, इफ़ यू वांट टू लर्न और इफ़ यू वांट टू get consultancy on the business analyst or data analytics, then Ghulam Mustafa is the best guy for it. That's it from my side.
Thank you so much. One thing you like talked about was very interesting. How you mentioned कि narrow down करना field को या जिसके ऊपर like you are more interested in, जिसमें आप उसके ऊपर dedication के साथ research करें. That point was very insightful. So I would definitely say कि I will learn these skills for sure. जिसमें interest हुआ, and I really hope कि जो बाकी सुन रहे हैं या सुनेंगे, these skills are definitely the skills that everyone should like have a hold on or should have their interests in, because बहुत helpful होती हैं ये चीजें. And yeah, definitely आजकल के trending जो market है, जो skills हैं, these are the ones. So time or limitations के लिहाज से we just covered these few skills, but we are very thankful to have all three of you here. And thank you so much for taking out time for having such a meaningful and informative discussion with us today. So yeah, I'll conclude this session now. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much.